Students, welcome to our channel. Guys, today our topic is ideal and non-ideal solution. So, firstly, we will see what are ideal solution and what are non-ideal solution. ये कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा आपको प्रीवियस वाले टॉपिक में भी बता चुकी हूँ कि सॉल्यूशन विच ओबेज द रोवेल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर्स are ideal solution. And to get know about the Rovel's law, that what is Rovel's law, what is non-Rovel's law, you have to see my previous parts of the videos. So students, let's start. What is the ideal solution? Ideal solution is nothing but only a simple concept, that is the solution, all the solutions which obeys the Rovel's law under all condition of temperature and pressure are called as ideal solution. While non-ideal solution just ideal solution का opposite case है, that is the solution which do not. Here you will always remember the do not, that is the solution which do not obey the Rovel's law under all conditions of temperature and pressure are called as non-ideal solution. तो ये हमारी बात हुई definition की. Here in the ideal solution, the change in volume of the mixture is always equals to 0 by convention. Also, the change in the heat energy of the mixture is also 0. This you have to learn because it is a scientifically proven concept. Next is the non-ideal solution. For non-ideal solution, the change in the volume is not equals to 0. Means there is some or the otherwise change in the volume as well as the heat energy. So here heat energy change of the mixture is not equals to 0. Here AB interaction is equals to AA interaction is equals to ABB interaction. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? Consider a beaker having the solution consisting of the A as well as B component. तो यहाँ पर जो हमारे components हैं उनका इंटरेक्शन, अगर वो आपस में इंटरेक्ट करें वो इंटरेक्शन, एज वेल एज अगर हमारा ए कॉम्पोनेंट इंटरेक्ट कर रहा है सॉल्यूशन में उसका इंटरेक्शन, एज वेल एज हमारा जो बी कॉम्पोनेंट आपस में इंटरेक्ट कर रहा है उसका इंटरेक्शन ऑलवेज इक्वल होगा. मीन्स दैट अगर हमारे पास इफ यू कंसिडर दैट इफ आई हैव one component as the ethyl alcohol while other component as cyclohexane, in which the interaction will not be equal. How we will see here. So in the ideal solution you have always to remember that AB interaction is also equals to the AA as well as the BB interaction. Means दो कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करें या इंडिविजुअली इंटरेक्ट करें उनका इंटरेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो ऑलवेज इक्वल ही रहता है. वाइल इन द नॉन आइडियल सॉल्यूशन AB इंटरेक्शन AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन आर नॉट इक्वल्स. मीन्स उनका आपस में एक दूसरे पर इफेक्ट पड़ता है. लाइक कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा, मतलब वो खुद से तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा. जैसे हम ले लें वाटर का केस, वाटर के साथ हमारे पास अमोनिया प्रेजेंट है तो अमोनिया आपस में वीकर बॉन्ड बनाएंगे, वाइल अमोनिया एज वेल एज वाटर आपस में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएंगे. तो ये हमारा हो गई थोड़ी इंटरेक्शन की बात की. कंपोनेंट्स अगर यहाँ पे हमारे डिफरेंट होंगे तो वो हमारा इंटरेक्शन पर इफेक्ट डालेंगे. सो हेयर AB इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल्स टू AA इंटरेक्शन एंड द BB इंटरेक्शन. Guys, you may also note down the examples of the ideal solution as we have done in our earlier class also. That is the benzene plus toluene, right? And next is the N-hexane plus N-heptane or the bromobenzene and the chlorobenzene. These three are the examples of the non-ideal solution. कभी कभी ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है that what are the ideal solution, give example. So आपको इसके एग्जाम्पल लर्न करके ही जाने हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, so the non-ideal solutions are of two types. The non-ideal solutions are of two types. That is the non-ideal solution showing positive deviation
and the non-ideal solution showing negative deviation from the Rowell's law. Here in the non-ideal solution showing positive deviation from the Rowell's law include that the difference in the volume of the mixture is always positive. Also, the difference in the heat energy of the mixture is always positive, and then AB interaction is less than AA interaction or BB interaction. While in the non-ideal solution showing negative deviation from Rowell's law, इसका केस इससे बिल्कुल अपोजिट है. दैट इज द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज नेगेटिव and the difference in the heat energy of the mixture is also negative. Also, the AB interaction is greater than AA interaction or BB interaction. इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल फॉलो करते हैं. Example includes the solution of ethyl alcohol and cyclohexane. In the solution of ethyl alcohol and cyclohexane, ethyl alcohol molecules are initially bounded by the hydrogen bonds. As all of you know that the ethyl alcohol will form the hydrogen bond because of the OH group. OH group will form the hydrogen bonds, which is a very strong bonds. But when cyclohexane is added to the ethyl alcohol, these hydrogen bonds break out. So interaction decreases हो जाएगा. दोबारा से समझिए. I repeat that in a beaker if you contain the ethyl alcohol, अब ethyl alcohol है हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे A इंटरेक्शन होंगे. कंसीडर द ethyl alcohol as A and the cyclohexane as B. तो यहाँ पर हमारे A इंटरेक्शन है which are strong interaction because of the hydrogen bonds. But as soon as I add the cyclohexane, the hydrogen bonds of the ethyl alcohol will break. So अगर उनके bonds break हो जाएंगे, that means interaction decreases. Interaction decrease हो जाएगा. So escaping tendency. अब यहाँ पर पहले तो bond अच्छे से bind थे एक दूसरे से. अब जैसे ही मैंने साइक्लोहेक्सेन डाला उसके इंटरेक्शन वीक हो गए. इंटरेक्शन वीक हो गए इसका मतलब कि वो इजिली एस्केप आउट कर सकेंगे. सो द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ दीज मोलिक्यूल्स इंक्रीजेस. Escaping tendency of the molecules increases, hence greater vapor pressure than expected. So vapor pressure भी हमारा increase हो जाएगा. This is the concept of non-ideal solution showing positive deviation from Rowell's law. I hope this example is clear to you. That is, ethyl alcohol initially form hydrogen bonds, but as soon as cyclohexane is added to the ethyl alcohol, the interactions decreases. So the escaping tendency of these molecules increases, and hence the vapor pressure is greater than expected. Next is the concept of non-ideal solution showing negative deviation from Rowell's law. Here you can consider the case for solution of acetone and chloroform. आप इसके केस में एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल लीजिएगा. अब आपको पता है एसीटोन इज द नेम फॉर द प्रोपेनोन एंड द प्रोपेनोन इज हैविंग द स्ट्रक्चर एज CH3 CO CH3 while chloroform is having the molecular formula as CHCl3. So when a solution of acetone and chloroform are mixed, then the intermolecular hydrogen bonding will take place. So अगर हमारे पास इनिशियली एसीटोन प्रेजेंट है एक बीकर में, तो वहां पर AA इंटरेक्शन में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड नहीं बनेगा. बट एज सून एज आई एडेड द
chloroform in the acetone solution, they mixed and they form the intermolecular hydrogen bonding. So हमारे AB interaction, ये A है और ये B है, तो हमारे AB interactions will be much higher. So as the hydrogen bonding take place, which is a stronger bond, so our AB interaction will be much higher. Hence the escaping tendency of the molecules decreases. So in this case escaping tendency of the molecules decreases. जब यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेंगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, thus escaping tendency of molecule decreases and hence the vapor pressure will also decrease. This is the case for non-ideal solution showing negative deviation from Raoult's law. गाइज इतना डिटेल में किसी और वीडियोस में आपको नहीं मिलेगा. जैसा मैंने पढ़ाया है ये आपके लिए सीबीएसई के लिए और अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल एनफ है. अगर आपको क्वेश्चन आए बट इज आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आपको सिर्फ यही सब लिखना है. In our next video, we will do about the azeotropes or the colligative properties. Guys, if you like the video, please hit the like button and don't forget to subscribe this channel and hit the bell icon to get all the videos notification. And also, you can comment your views to motivate us. Thank you and have a nice day.